भारत सरकार जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से मैं संचाली अरोरा भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय मंत्रीगण, सचिवों, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, राज्य के अधिकारियों, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठन, शैक्षणिक संस्थान, विश्व बैंक, बांध मालिक, मीडिया कर्मी और सम्मानित अतिथियों का जयपुर के बांध सुरक्षा पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं फिर से। 2 दिन के लिए आयोजित किए जा रहे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय है सुरक्षित और संरक्षित बांध राष्ट्र की समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। The theme for today's conference, or this 2-day conference right here in Jaipur, is Safe and Secure Dams Ensure Nation's Prosperity. Now, before we take this conference forward, इससे पहले कि हम इस conference का formal तरीके से मंगल आरंभ करें, आप सभी से अनुरोध करूंगी राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. Let's come together and start the day by paying our respects to our great nation by standing in honor of the Indian national anthem, Jana Gana Mana. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाही तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you. Ladies and gentlemen, this 2 days international conference on dam safety is being organized by the Ministry of Jal Shakti, the Government of India, in collaboration with the Rajasthan Water Resources Department, Central Water Commission, National Dam Safety Authority, MNIT Jaipur, Vapcos Limited, World Bank and Asian Infrastructure Investment Bank. With over 6,000 dams in India, ranked third globally in terms of large dams, and approximately 80% of these dams exceeding 25 years of age, while 234 surpassing the century mark, ensuring their safety is of paramount importance. With this objective in mind, the conference aims to provide a prime venue for experts from India and across the world to come together and debate cutting-edge topics in dam safety and management. This conference stands backed by esteemed organizers, academics, DRIP implementing agencies, sponsors, and media partners. More than 800 national and international delegates are attending this 2-day conference, and we are more than grateful to all of you for being here with us. We are grateful, of course, to the Honorable Vice President of India, the Honorable Ministers on the dais for taking out their valuable time to be here with us today. We would like to present a memento and a shawl as a token of appreciation to our respected dignitaries. मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, Honorable Minister of Jal Shakti, to kindly present a memento to the Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankan ji, as a token of our appreciation. आप लोगों की तालियों के बीच, of course. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री पंकज कुमार जी से, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, to kindly present a memento to everyone on the dais, starting with Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, the Honorable Minister of Jal Shakti.
Thank you, Shri Manik Sahaji, Honorable Chief Minister of Tripura. Shri D.K. Sivakumarji, Honorable Deputy CM, Karnataka. Shri Mahendrajit Singh Malviya, Honorable Minister of Water Resources, Rajasthan. Srimati Usha Sharma Ji, Chief Secretary, Rajasthan. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, Jal Bharo ceremony in the Indian culture is significant for its religious, environmental, cultural, and social aspects. It not only serves as a holy offering, but also carries a broader message of the reverence for water, community participation, and, of course, the preservation of the cultural traditions. मैं अनुरोध करूंगी भारत के उपराष्ट्रपति और साथ ही मंच पर विराजमान हमारे सभी माननीय अतिथियों से कि कृपया जल भरो समारोह में हमें शामिल करें, हमारे साथ शामिल हों, हमारा साथ निभाएं। देवियों सज्जनों, आप सभी लोगों से अनुरोध है, जल भरो समारोह यहाँ स्टेज के सामने होगा और जैसे ही इसकी शुरुआत होती है, as soon as it begins, we'll request you all to please put your hands together and join in the same. Thank you, everyone. Well, लिबिया में संडे को हुए इंसिडेंट के बारे में हम सभी लोग वाकिफ हैं. We would like to observe a 1-minute silence for everyone who has lost their lives in Libya due to the damage which happened because of the dam. We'll request everyone to kindly stand up at their respective places. The Ministry of Jal Shakti has, through its various initiatives, been a part of an outreach program in which we have collaborated with the Ministry of Railways for vinyl wrapping of 2 trains, namely Himsagar Express and Kamakya Express. We would like to have an AV showcased right here about this vinyl wrapping. Can we have the AVs, please? जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल है तो कल है। इस सच्चाई से अवगत और पीने योग्य पानी की कमी से चिंतित मानवता के प्रहरी हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
कभी लाल किले की प्राचीर से तो कभी मन की बात में जल संरक्षण, जल आपूर्ति और जल सफाई की बात कर लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते रहे। जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस विजन ने सबका नजरिया बदल दिया। फिर क्या था, एक के बाद एक अभिनव प्रयोग शुरू हुए। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हुई और मां गंगा को स्वच्छ करने का काम शुरू हुआ। धरती के अंदर का जल स्तर बढ़ाने और जल संकट मिटाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना ने काम किया। हर घर जल योजना से 13 करोड़ से अधिक घरों में पहुंचा नल से जल। स्वच्छ भारत मिशन से 4 लाख गांव हुए ODF प्लस और जल शक्ति अभियान कैच द रेन से वर्षा का शुद्ध जल बचाने के लिए हुआ 1 करोड़ से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण। और जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई तो जीवन रेखा रेल की याद आई, क्योंकि भारतीय रेलवे न सिर्फ यात्रियों और सामानों का परिवहन करता है बल्कि पूरे देश को भी एक सूत्र में जोड़ता है। और फिर ये जल आंदोलन नहीं, जन आंदोलन है। प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कामाख्या एक्सप्रेस असम से पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए गुजरात को जाने को तैयार हुई तो हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के लिए निकल पड़ी। इसकी आगे की सफलता की कामना के साथ आज महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के कर कमलों से इन जीवन रेखाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है। थैंक यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, असम कामाख्या से शुरू हुई कामाख्या एक्सप्रेस गांधीधाम गुजरात की ओर रवाना होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देश भर में जल संरक्षण का संदेश फैलाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय की ओर से मैं इन ट्रेनों को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखाने के लिए हमारे सम्मानित उप राष्ट्रपति जी से along with everyone present on the dais रिक्वेस्ट करूंगी। लाइव स्ट्रीम पर आप इस ट्रेन को इस वक्त देख सकते हैं, कामाख्या एक्सप्रेस जो इस समय वाराणसी में खड़ी है, सिर्फ हरी झंडी का इंतजार है। आइए इस महत्वपूर्ण क्षण पर, इस अवसर पर जोरदार तालियां हो जाएं। These trains, while traversing throughout the length and breadth of the country, will show the flagship schemes of the ministry. हिमसागर एक्सप्रेस जो है वो ट्रैवल करती है कन्याकुमारी से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक 3790 किलोमीटर का सफर तय करती है 12 स्टेट्स के थ्रू। और कामाख्या एक्सप्रेस जो अभी अभी रवाना हुई है वाराणसी से, वो कामाख्या से गांधीधाम जाती है कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3150 किलोमीटर्स कवरिंग 7 स्टेट्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मंच पर। The National Register of Large Dams, NRLD, is a compilation of more than 6,000 major dams of India. Once again, I'll be requesting the Honorable Vice President of India, along with the Honorable Ministers on the dais, to kindly unveil now the NRLD. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, आप ही के सामने ये रजिस्टर जो है मौजूद है, अगर आप इसे प्लीज अनवील कर दें और हमारे सामने इट इज अ परफेक्ट पिक्चर अपॉर्चुनिटी अपने कर कमलों द्वारा NRLD का अनावरण करें।
Ladies and gentlemen, let's have a huge round of applause for this moment where NRLD, the National Register of Large Dams, is being unveiled. अगर आप लोगों की तालियां बजती रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इस रजिस्टर को रिसेंटली अपडेट किया गया है और जब आप इसके गो थ्रू करेंगे इस रजिस्टर के थ्रू तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष में कितने सारे लार्ज डैम्स हैं और इनमें से कितनों को ज़रूरत है एक बार फिर से रिजुविनेशन की और उनकी सेफ्टी के लिए हम ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं. थैंक यू. इसी के साथ अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री पंकज कुमार जी से, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फॉर द वेलकम एंड की नोट एड्रेस. जोरदार तालियों के साथ श्री पंकज कुमार जी. Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, Honorable Minister of Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Chief Minister of Tripura, Shri Manik Saha ji, Honorable Deputy Chief Minister of Karnataka, Shri D.K. Shiv Kumar ji, Honorable Minister of Water Resources, Rajasthan, Shri Mahendrajit Singh Malviya ji, Honorable Ministers of Water Resources from the states of Goa, Manipur, Odisha, Uttarakhand, Uttar Pradesh, and Sikkim, Chief Secretary of Government of Rajasthan, Srimati Usha Sharma ji, ambassadors, officials from foreign countries and the World Bank, senior officers from Government of India and state governments, international experts and national experts, academicians and stakeholders, ladies and gentlemen, a hearty welcome to the International Conference on Dam Safety. I must express my gratitude to Honorable Vice President of India for sparing his valuable time and gracing the occasion with his august presence. I must also express gratitude to Honorable Minister of Jal Shakti for having guided us with his foresight, as always. And our gratitude to the dignitaries on the dais and off the dais who are present today, lending weight. I would also like to mention that the department's team, led by the Special Secretary and all our officers in collaboration with Government of Rajasthan and other stakeholding organizations, have toiled behind the scenes to make this event happen. A very big hand to our dignitaries, the team, and to all of us. Dams play a vital role in meeting ever-increasing demands of drinking water, irrigation, hydropower, and industrial processes for socio-economic growth. They also effectively mitigate
natural calamities like floods and droughts faced by large swaths of humanity. Dams have contributed to the development of civilization for thousands of years. Mesopotamia and the Middle East built dams for water control in ancient times. The earliest known dam, the Java Dam in Jordan, was built about 5,000 years ago. India's first dam, the Kalanai or the Grand Anicut, was built on the Kaveri River around 2,000 years ago. It is functional and irrigates about 1 million acres. Similarly, the earthen dam of Thanur Tank in Karnataka is over 1,000 years old, and it's also in use. At the time of independence in 1947, there were more than 300 large dams in India. Post-independence, India invested heavily in dams and related infrastructure for irrigation to ramp up our food production and also to generate hydropower. Today, there are more than 6,000 large dams in the country. The world has about 62,000 large structures as per records maintained by the International Commission on Large Dams. And India ranks globally third after China and United States of America in terms of numbers of large dams. These dams and associated infrastructure required enormous investments and displacement of people affected by dam submergence. Today, these dams irrigate a sizable portion of India's cultivable land and also meet the increasing demand of water for country's agriculture, municipal, industrial, renewable energy, and tourism needs. Many of the Indian dams are considerably old. About 80% of India's dams are now more than 25 years old, and about 227 dams are more than 100 years old. On account of aging and various maintenance issues, several of these dams face varying degrees of inadequacy in meeting the current standards of dam health and safety. As per the records maintained by the Central Water Commission, India has so far encountered 42 large dam failures. The failure of Machu Dam 2 in Gujarat in 1979 has been India's worst dam-related disaster. Around 2,000 lives were lost in this incident. We are all still trying to come to grips with the catastrophic flooding and failure of 2 dams following heavy rains in Derna, Libyan port city, earlier this week, resulting in loss of lives in several thousands. A horrific tragedy indeed. Looking at the global water scenario, the United Nations World Water Development Report 2023, titled Partnerships and Cooperation for Water, brings out that water use has been increasing globally by roughly 1% per year over the last 40 years and is expected to grow at a similar rate through to 2050, driven by a combination of population growth, socio-economic development, and changing consumption patterns. The bulk of this increase is concentrated in middle and lower income countries, particularly in the emerging economies. As a result of climate change, seasonal water scarcity will increase in regions where it is currently abundant, such as Central Africa, East Asia, and parts of South America, and worsen in regions where water is already short in supply, such as the Middle East and the Sahel
in Africa. On average, 10% of the global population lives in countries with high or critical water stress. Given this scenario brought out in the UN report, it is clear that the dams would continue to play a major role in ensuring water security. Several trends today are creating strong incentives for investment in health and safety of dams. First, the scope for building new reservoir capacity is quite limited today. Much of the surplus water available in river basins has already been tapped. Second, the cost of new large infrastructure projects has increased substantially. Third, aging of a large proportion of dams requires increasing attention on their maintenance and safety. And finally, the impact of intensification of global water cycle due to climate change requires that measures are taken to make the large water infrastructure more resilient to changes in the pattern of precipitation. For all these reasons, dam safety has become a pressing concern. The enactment of Dam Safety Act in 2021 has ushered in a new era in dam safety in the country. The act is aimed at ensuring surveillance, inspection, operation and maintenance of the specified dams for the prevention of dam failure-related disasters. It provides for an institutional mechanism at both central and state levels to address structural and non-structural measures required for the safe functioning of dams. As per the provisions of the Act, Government of India has constituted the National Committee on Dam Safety and the National Dam Safety Authority. The committee, with representation from center, states, independent experts, is headed by the chairman, Central Water Commission. It is entrusted with the responsibility of evolving a nationwide dam safety policies, standards, and regulations. The authority, which acts as a regulatory body, has been assigned roles related to implementation of pertinent policies, guidelines, and standards. All the 31 dam-owning state governments have constituted a State Committee on Dam Safety and established the State Dam Safety Organization. And after the implementation of the Act, the number of inspections of large dams has gone up tenfold. For improving the safety and operational performance of selected dams, a dam safety assurance and rehabilitation project assisted by the World Bank was implemented in 4 states of the Indian Union in 1990s. This was followed by the Dam Rehabilitation and Improvement Project with funding assistance from the World Bank in 2012. Under this program, 223 existing dams located in 7 states were comprehensively audited and rehabilitated at a cost of about 2,600 crores or $325 million. After completion of the program in 2021, the Government of India has now taken up DRIP 2 and 3. The scheme envisages rehabilitation and safety improvement of 736 dams located in 19 states with a budget outlay of about 10,200 crores or $1.25 billion over a period of 10 years. DRIP 2 has become operational. It is being co-financed by the World Bank and the Asian Infrastructure and Investment Bank. In addition, and this is very important, we have asked the state governments and dam-owning agencies to create separate budget lines with adequate provision for safe upkeep of their dams. Apart from the regulatory framework and funding for dam rehabilitation, capacity building is the third
most critical pillar. Government of India has established an International Center of Excellence for Dams at the Indian Institute of Technology, Roorkee. The center will provide specialized technical support in investigation, modeling, research and innovation, and technical support services to the Indian and overseas dam owners. This morning, Honorable Minister of Jal Shakti has inaugurated the National Center for Earthquake Safety of Dams at the Malviya National Institute of Technology, Jaipur. To create a large pool of experts in various domains of dam safety, master's programs on dam safety and dam engineering have been started at two premier institutes, the Indian Institute of Technology, Roorkee, and the Indian Institute of Sciences, Bengaluru. I am happy to mention that international students are also participating in this program. The International Conference on Dam Safety 2023 provides a platform for deliberations on vital aspects of dam safety, such as risk assessment, dam health assessment, operation and maintenance, emergency management, sediment management, and dam rehabilitation techniques. The response in terms of participation of delegates and submission of papers has been overwhelming. As an integral part of this conference, an exhibition is also being organized at the venue, where several national and international organizations will showcase their technologies, products, instrumentation, and services relevant to various aspects of dam safety. The Department of Water Resources, River Development, and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti, is committed to working in hand with our international partners, state governments, and organizations to build a safer and sustainable future for our dams. We believe that through knowledge sharing, collaboration, and a collective commitment to the welfare of our communities, we can achieve this goal. The monumental tragedy in Derna cannot be allowed to happen again. The international community must work together to effectively address issues of dam safety. It is hoped that this conference will bring us together in this endeavor. Thank you. Thank you very much, sir, for that overview. Ladies and gentlemen, it's now time, before we proceed further, for a short film on Dam Safety Act, Securing the Future. Can we have the film, please? For decades, dams have played a pivotal role in India as source of water supply, irrigation for crops, electricity generators, and flood mitigators. India has the third highest number of large dams in the world, with 6,138 large dams in operation and another 143 under construction. Ensuring the safety of dams is vital for India's water security. With aging dams and a changing climate, dam failure is an ever-present risk, with severe and long-lasting consequences on lives, livelihoods, and environment. Over the last 100 years, there have been 42 large dam failures. The most severe of these was the collapse of Gujarat's Machu Dam in 1979, killing thousands of people. In terms of dam safety, a new era has been ushered in with the enactment of the Dam Safety Act 2021. This act envisages setting up of a National Dam Safety Authority
the state dam safety organizations, the state committees on dam safety. And it's a matter of great satisfaction that all these structures have come into being in the last 2 years. Under the Dam Rehabilitation and Improvement Program called DRIP, which we are funding with the help of the World Bank and the Asian Infrastructure Investment Bank, several dams have been taken up in the states for making them more robust and removing their current deficiencies. Over the years, several states and dam-owning agencies, central agencies implemented dam safety measures and established dam safety organizations. However, in the absence of federal law, dam safety rules and practices tend to vary from state to state and even dam owner to dam owner. What was needed was a unified dam safety legislation and strategy for better synergy, coordination, and management of dams. It is this need that was answered by the National Dam Safety Act that was enacted on 13th December 2021. The Act manages the delicate balance of providing a comprehensive framework for dam safety without diminishing the rights and responsibilities of dam owners. The Act establishes and empowers the institutional setup for dam safety at the central and state levels and delineates clear distinctions between the responsibilities of owners, operators, and regulators. The National Committee for Dam Safety, comprised of central and state representatives along with independent experts, and is chaired by the chairperson of the Central Water Commission. It is entrusted with the responsibility of evolving nationwide dam safety policies, standards, and regulations. The National Dam Safety Authority acts as a regulatory authority and has been assigned roles relating to the implementation of pertinent policies, guidelines, and standards. The State Committee on Dam Safety, with representations of concerned as well as affected neighboring states, along with central and independent experts, will take up issues related to dam safety oversight, coordination, prioritization, etc. within the state. The State Dam Safety Organization has been assigned the crucial role of watchguarding the activities of dam owners via perpetual surveillance and safety inspections. In line with global best practices in dam safety, the Act calls for regular inspection of dams, preparation and deployment of emergency action plans, rigorous dam safety reviews, adequate repair and maintenance funds for dam safety, and instrumentation and safety guidelines. Following the enactment of the Dam Safety Act 2021, all states have constituted the State Committee on Dam Safety and State Dam Safety Organization. Pre- and post-monsoon inspections have increased from 1,200 to more than 12,000 annually. Dam inspection format has been standardized. Dam health status is now classified as Category 1, 2, and 3, prioritizing dams for rehabilitation measures. International centers of excellence on dam safety are being established at IIT Roorkee and at IISc Bengaluru. The National Center for Earthquake Safety of Dams has been set up at MNIT Jaipur. There's renewed emphasis on the capacity building of dam safety officials. One of the world's first master's programs on dam safety was launched in IIT Roorkee and IISc Bengaluru. States are now embarking a dedicated O&M budget specifically for dam maintenance. With the effective implementation of the Dam Safety Act, the dams that have fed, powered, and protected us Indians for decades will continue to do for the generations to come.
Thank you. It's now my honor to invite and request Shri Gajendra Singh Shekhawatji, Honorable Minister of Jal Shakti, Government of India, for his valuable address. Ladies and gentlemen, amongst a round of applause from everyone, please. बांधों के सुरक्षा को लेकर के विश्व में नई चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी में जिनकी गरिमामयी उपस्थिति और जिनके प्रेरक मार्गदर्शन से निश्चित रूप से इस कॉन्फ्रेंस की सफलता सुनिश्चित होने वाली है, ऐसे हम सब के लिए श्रद्धेय भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मानिक साहा साहब, कर्नाटक के माननीय उप मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्री डी.के. शिव कुमार जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान के जल संसाधन मंत्री श्री महेंद्रजीत मालवीय जी, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान आदरणीय उषा जी और भारत सरकार के जल संसाधन सचिव आदरणीय श्री पंकज कुमार जी। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि आज इस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकारों के मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, मणिपुर और सिक्किम के माननीय मंत्रियों के साथ में अनेक देशों के महामहिम राजदूत भी इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित आए हैं। देश भर से बांधों की सुरक्षा और बांधों के निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले सारे सरकार के अधिकारियों के साथ साथ में आज इस कॉन्फ्रेंस में हम सब लोगों के साथ अनेक सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया से उपस्थित हुए हैं। मैं विभाग का दायित्व होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका मेरे अपने शहर अपने प्रदेश राजस्थान में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि बांधों ने न केवल मानव की सभ्यता के विकास और उसके साथ साथ में उसके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हजारों सालों से सदियों से अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। न केवल पीने का पानी, सिंचाई की आवश्यकताओं की आपूर्ति, हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति और उसके साथ साथ में बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी बांधों का बहुत बड़ा योगदान पिछले सदियों से हम सब ने देखा है। जैसा अभी पंकज जी उल्लेख करते हुए बता रहे थे कि भारत में भी बांधों के निर्माण और इन सभी प्रयोजनों के निमित्त बांधों को निर्मित करके उपयोग में लेने की बहुत पुरानी परंपरा है। जैसा उन्होंने उल्लेख किया कि 2000 साल पहले कावेरी नदी पर चोल साम्राज्य के किंग कारिकलन ने ग्रैंड अनायकट बांध का निर्माण किया था, जो इतने वर्ष बीत जाने के बाद में भी 2000 वर्ष बीत जाने के बाद में भी आज भी लगभग 10 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई जिसके माध्यम से सुनिश्चित होती है। अन्य बांध जो पूरे विश्व भर में 5000 साल से भी अधिक वर्षों से जो सेवारत हैं, the dams which are serving for more than 5000 years in the world, जब इस विषय पर चर्चा होती है और इन विषयों का उल्लेख होता है तो निश्चित रूप से एक प्रश्न हम सबके मन में आना चाहिए कि जब 2000-5000 साल से बांध दुनिया के अलग अलग कोनों में काम कर रहे हैं, सेवारत हैं, तब बांधों की उम्र जिसकी अभी चर्चा की गई कि भारत में
जो 6000 बांध होने के नाते हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बांधों को ओन करने वाले देश हैं। और हमारे 280 के लगभग बांध ऐसे हैं जो 100 साल से पुराने हो गए। हमारे 80% बांध ऐसे हैं जो 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो गए। लेकिन जब 2000 साल की उम्र का बांध ग्रैंड एनाइकट भारत में सेवारत है और अहर्निश सेवा कर रहे हैं, और जब दुनिया में 5000 साल पुराने बांध भी काम कर रहे हैं, तब केवल 100 साल की उम्र हो जाने के बाद में बांध की उम्र या बढ़ती भी वय और उसकी सुरक्षा, इन दोनों के बीच के संबंध को लेकर के क्यों कर चिंता करने की आवश्यकता है। निश्चित ही ये प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में उठना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके पीछे का इतिहास उठा करके देखें कि कितने सारे बांध विश्व भर में पिछले इन सदियों में, या जब से लिखित इतिहास लिखा जाता है तब से, ऐसे बांध जिनके टूटने की घटनाएं और उसके कारण से जो डिवेस्टेशन हुआ है, उसके कारण से जो आपदा जनित परिस्थितियां खड़ी हुई, उसके कारण से मानव जाति को, मानव जीवन को, और उसके साथ साथ में बांध के नीचे डाउनस्ट्रीम में द एंटायर इकोसिस्टम हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड और चेंज्ड, उसको लेकर के कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है। तब हम सबके संज्ञान में आता है कि बांधों की सुरक्षा बदलते हुए परिदृश्य में, और विशेष रूप से जब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम सबको दिखाई दे रहे हैं, तब हम सबके सामने कितना बड़ा विषय है जिस पर अब गंभीरता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में भारत में 42 ऐसे बांध टूटने की घटनाएं रजिस्टर हुई। 1917 में के बाद से जो रिकॉर्ड CWC मेंटेन कर रहा है, इन सारी घटनाओं को की तरफ यदि जितना इतिहास अभी हम सबके पास में उपलब्ध है, आदरणीय पंकज जी ने अभी मच्छू बांध टूटने की चर्चा की, 2000 लोगों का जीवन उसके कारण से समाप्त हुआ था। आज की वर्तमान परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में जब इस तरह की कोई घटना होती है, तो पूरे विश्व भर के लिए न केवल एक चिंता का विषय बनती है, अपितु साथ साथ में जिस देश में इस तरह की ब्रीच ऑफ डैम और एनी रिजर्वायर इस तरह की घटना होती है, देन इट बिकम्स ए इश्यू ऑफ नेशनल शेम, एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बनता है। और हमारे सारे अभियंता जो निर्माण से लेकर के रखरखाव तक, या सरकारी तंत्र में जितने भी लोग जिनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी है, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो मच्छू बांध का टूटने की घटना हुई थी, और उसके बाद में मोरबी शहर ने जिस तरह का अभिशाप झेला, पूरा के पूरा मोरबी शहर विस्थापित होकर के नया शहर बसाना पड़ा, ये निश्चित रूप से एक बड़ी शर्म का विषय देश के लिए बना था। अभी हम सब ने अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की। जो पिछले सप्ताह रविवार के दिन लीबिया में जिस तरह की घटना हुई, और डरना टाउन में 5000 लोग बांध टूटने के कारण से काल कबलित हुए, दिवंगत हुए, और साथ ही साथ अनेकों हजार करोड़ों रुपए की संपदा नष्ट होने के साथ साथ में वहां की पूरी अर्थव्यवस्था पर कई वर्षों के लिए विराम लगा है। ऐसे में निश्चित ही आज हम सब लोगों के लिए ये और भी ज्यादा चिंता का विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। और मुझे कोई ईश्वर का विधान है कि आज जब हम डैम सेफ्टी की इस पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सब खड़े होकर के हम बातचीत कर रहे हैं, व्हेन वी हैव कम टुगेदर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्री, उससे 7 दिन पहले, उससे 4 दिन पहले भी इस तरह की घटना बांध टूटने की हुई है। और मुझे ठीक से याद है कि जिस दिन बांध सेफ्टी को लेकर के, बांधों की सुरक्षा को लेकर के भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर, उनके मार्गदर्शन में हम संसद में कानून बनाने के लिए बिल लेकर के आए थे, और डैम सेफ्टी एक्ट पर जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, उस दिन, उससे भी 4 दिन पहले यूरोप में एक लेक होम्स बांध टूटने की घटना हुई थी। शायद ये संयोग भी है, लेकिन इस तरह के संयोग हमें आने वाले समय में हम और गंभीरता के साथ में काम किस तरह से करें, इस दृष्टिकोण से हमें निश्चित ही नई दिशा सोचने के लिए प्रदान करते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में हम डैम सेफ्टी का एक एक्ट लेकर के आए, और संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिलजुल कर और बहुत सकारात्मक चर्चा के साथ में उस बिल को पास किया।
और निश्चित ही ये भारत में एक नए युग का सूत्रपात था। मुझे स्मरण आता है कि जब मुझे इस मंत्रालय का दायित्व मिला था, उस समय में कुछ बांधों पर मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने व्यक्तिगत रूप से, दो आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन और एन इंजीनियर, बट स्टिल आई हैव फेल्ट दैट देयर आर सीरियस शॉर्टकमिंग्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द डैम्स which I have visited। और उसके बाद में हम सब ने इस विषय को तय किया कि भारत में बांध सुरक्षा को लेकर के जो एक कॉमन प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, उसको लेकर के जिस तरह की चेतना का आवश्यकता है उसका नितांत अभाव है। और इस दृष्टिकोण से हम सबको सोचते हुए इसकी एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्था को खड़ी करने की आवश्यकता है। और ये केवल विषय तात्कालिक उस समय की विजिट से आया हो ऐसा नहीं। जब हमने मंत्रालय में बैठकर इन सब विषयों पर विचार करना शुरू किया तो संज्ञान में आया कि मोरबी के हादसे के बाद में एक कमेटी बनी थी, जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि इस तरह का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और इस तरह का एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और सिस्टम जो है देश में डैम सेफ्टी को लेकर के बनना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 80 के दशक में जिस विषय पर विचार प्रारंभ हुआ था, जो कमिटीज बनी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, डिफरेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज ने उस पर विचार विमर्श करते हुए अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन 40 साल से रुका हुआ वो विषय इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पहल पर संसद में 2021 में पारित हुआ। और आज उसके बाद में जिस तरह की व्यवस्थाएं बदली, अभी आदरणीय पंकज कुमार जी जब बात कर रहे थे उन्होंने विस्तार से कि किस तरह से 4 स्तर की व्यवस्था इसको लेकर के हमने खड़ी की, नेशनल डैम सेफ्टी कमेटी एंड अथॉरिटी, और ठीक उसी के रेप्लिका में स्टेट्स में जिस तरह की व्यवस्था हमने की। लेकिन उसके साथ में देश में एक चैलेंज और भी था। अनेक ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर डैम ऑनिंग जो है स्टेट कोई और है और साथ में डैम का लोकेशन किसी और दूसरे प्रदेश में, और वहां भी इस तरह की चुनौतियां, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप जल और बांध दोनों ही राज्यों का विषय है और देश के 92% से ज्यादा बांध जो हैं वो राज्यों के स्वामित्व में है। ऐसी परिस्थिति में जहां ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी कि प्रदेशों के बंटवारे के चलते हुए या राज्यों के बंटवारे के चलते हुए स्वामित्व किसी और का है और बांध का लोकेशन किसी और प्रदेश में, और वहां सरकारों के बीच में पॉलिटिकल मतभेद होने के चलते हुए या लीगेसी इश्यूज के चलते हुए वहां उन बांधों के रखरखाव को लेकर के वाद अब सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। और उसके बाद में भी उन बांधों के रखरखाव पर जिस तरह के काम करने की आवश्यकता थी वो काम हम नहीं कर पा रहे थे। इस डैम सेफ्टी एक्ट के माध्यम से उसका भी एक स्थायी समाधान करने की दिशा में हमने सफलता प्राप्त की है। जैसा अभी पंकज जी ने कहा कि इस डैम सेफ्टी एक्ट के प्रभाव में आने के बाद अब बांधों की स्पेसिफिक रिपेयर्स के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, सर्विलांस के लिए और उन सब विषयों पर ऑर्गेनाइज तरीके से ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ में उस पर निवेश की व्यवस्था भी हो। इस दृष्टिकोण से एक नई चेतना का उदय इस डैम सेफ्टी एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद में हुआ है। मैं सभी राज्यों के प्रतिनिधि लगभग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस छोटे से कालखंड में सभी राज्यों ने बहुत सकारात्मक सहयोग करते हुए, बहुत सकारात्मक रवैया अपनाते हुए जो अपने यहाँ पर स्टेट पर जिस तरह के प्रोटोकॉल्स और जिस तरह के स्ट्रक्चर्स की बनाने की आवश्यकता थी, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस खड़े करने की आवश्यकता थी, अथॉरिटीज बनाने की आवश्यकता थी, उन दोनों विषयों पर सकारात्मक काम किया और आज देश के हर एक प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था खड़ी हुई। और उसी का परिणाम है जिसका उल्लेख अभी सचिव महोदय कर रहे थे कि जहां देश में इससे पहले बांधों की प्री मानसून एंड पोस्ट मानसून स्टडीज जो होने चाहिए, जो इंस्पेक्शंस जो होने चाहिए, उसको लेकर के जिस तरह की उदासीनता थी, लोग उसको लेकर के सिर्फ चलता है ऐसा एप्टीट्यूड जो चल रहा था, उसके चलते हुए कुछ 100 इंस्पेक्शंस कुल मिलाकर के साल में ऐसे रिपोर्ट होते थे। आज पिछले एक साल में 12,000 से ज्यादा इंस्पेक्शंस देश में हुए। ये निश्चित रूप से एक नए युग का सूत्रपात इस दृष्टिकोण से मैं देख सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने डैम सेफ्टी इस एक्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम भी साथ में कंसीव किया। वर्ल्ड बैंक और विदेश की वित्त पोषण के साथ में जो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये देश के 750 से ज्यादा बांधों की
रिहेबिलिटेशन, रिजुविनेशन, उनके स्टैंडर्डाइजेशन, उनके ऑपरेशन का रूल कर्व, उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, और उसके बाद में बांध में पानी छोड़े जाने के की अवस्था में कितना इनंडेशन होगा, किस स्तर तक इनंडेशन होगा, इन सब की व्यवस्था करने की दिशा में स्टडी करने के साथ साथ में बांधों के रिजुविनेशन पर भी काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है जब मैं आप सबके सामने इस साथ में ये साझा करता हूं कि पिछले वर्ष इसी वर्ष में कुछ महीने पहले मुझे I had been to United States and we have visited along with my officers the Tennessee Valley Authority, जिसके लिए माना जाता है कि वो जो पिछले अनेक दशकों से they are working in the field of dam safety, और उन्होंने इस तरह का प्रोटोकॉल अपने यहाँ पर डेवलप किया है। When we visited there, they gave us with a huge pride, they gave us a presentation what they have worked, how they have done the work, कैसे वो अपने यहाँ पर काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज जिम्मेदारी से इस मंच पर खड़ा होकर के कह सकता हूँ कि जब उस 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन और उनके साइट विजिट्स के बाद में जो तुलनात्मक दृष्टिकोण से हमने अपने यहाँ काम किया, बेशक हमारे यहाँ लीगेसी इश्यूज रहे होंगे, बेशक हमने दशकों तक इस दिशा में शायद काम नहीं किया होगा, और हमारे यहाँ इस विषय को लेकर के एक बड़ी भारी उदासीनता राज्यों में और केंद्र सरकार के स्तर पर रही होगी। लेकिन जब मैंने उनके इस विषय को समझा और उसके बाद में भारत में हमने पिछले 10 साल में इस दृष्टिकोण से जिस तरह काम किया है, चाहे वो डैम सेफ्टी, चाहे ड्रिप 1 का प्रोग्राम हो, ड्रिप 2 का प्रोग्राम हो, डैम सेफ्टी एक्ट का इनैक्टमेंट और उसका बाद में नीचे धरातल पर उसको उतारने का विषय हो, जब मैंने उस विषयों को देखा और समझा तो मैं अत्यंत गर्व के साथ में अभिभूत होकर के उस प्रेजेंटेशन से उठा था कि चाहे स्पीड की दृष्टिकोण से देखो, स्केल के दृष्टिकोण से देखो, और क्वांटम ऑफ वर्क जो हमको करना है उसके दृष्टिकोण से हम किस गति के साथ में काम कर रहे हैं, उस रेलेवेंस के दृष्टिकोण से भी देखो। इतने दशकों से काम करने वाले टेनेसी वैली अथॉरिटी से हम कहीं पीछे हों, ये मुझे प्रतीत नहीं हुआ। आज आप सबके सहयोग से हमने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और राज्यों के एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ में हमने जिस तरह से काम किया है, आने वाले समय में निश्चित ही ये भारत जो है डैम सेफ्टी के फील्ड में एक बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगा। जैसा अभी आदरणीय सचिव महोदय ने बताया, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एकेडमिया को साथ लेकर के इस दिशा में हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी काम करना प्रारंभ किया है। IISc बेंगलुरु में, IIT रुड़की में, MNIT जयपुर में, इन तीनों ही संस्थानों में जिस तरह से हमने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और साथ में स्पेशलाइजेशन कोर्सेज एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स व्हाट वी हैव कार्व्ड आउट, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले राज्यों के प्रतिनिधि और इंजीनियर्स भी वहां आकर के उनको भी भेजा जाकर के उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके। जब हम डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे काम कर रहे थे और जब हमने उसके लिए ऐसे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जिनमें से अनेक लोग यहाँ आज उपस्थित होंगे, जब उनकी आवश्यकता थी, उनको बुलाया गया, उनको ढूंढा गया और उसको लेकर के जब टेंडर्स इन्वाइट किए गए, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि पूरी दुनिया में देयर आर अ फ्यू पीपल हु हैज दैट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज। बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे हैं। और जब आता था कि दुनिया की जो है टॉप 10 कंट्रीज जिन्होंने बिड किया उसके लिए, उसमें से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे वो 5 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वही 10 कंपनीज ने ऑफर किए थे, और वही सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो सभी पूरी दुनिया की कंपनीज उन्हीं के पीछे भाग रही थी। और तब मुझे लगता है कि ये आवश्यकता हमने महसूस की कि भारत जो तीसरा बड़ा बांधों वाला देश है और जिस तरह से इस दिशा में आगे प्रगति कर रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से स्पेस साइंसेज से लेकर के और अन्य जीवन की अन्य विधाओं में भारत आज विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रहा है। डैम सेफ्टी को लेकर के भी भारत आने वाले समय में विश्व का नेतृत्व करे, और ये जो वैक्यूम अभी दुनिया में है इस सब्जेक्ट को लेकर के, आने वाले समय में आप ही सब लोगों में से कुछ लोग मिलकर के इस वैक्यूम को पूरा करेंगे। आने वाले 2 दिन तक हम इससे जुड़े हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। बहुत सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स अपने अनुभव के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 2 दिन की कार्यशाला, जिसमें आप पूरे देश के लगभग 28 प्रदेशों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए और दुनिया भर से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इस विषय में आए हैं, हम सब लोग मिलकर के जो विचार मंथन करेंगे और उससे जो नवनीत निकलेगा वो बांधों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप में
एक नए युग का सूत्रपात आने वाले समय में करेगा। मैं आप सबका पुनः स्वागत करते हुए महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का हृदयपूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूं, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहा जी का, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार साहब का, सभी माननीय मंत्रीगण जो आज यहाँ उपस्थित आए हैं, उन सब का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हु हैज कम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आई अगेन थैंक देम फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब बारी है कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इट्स माय डिस्टिंक्ट प्रिविलेज आई वुड से टू नाउ रिक्वेस्ट our chief guest for the day, Honorable Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar ji, for his much awaited insights and words of wisdom on this momentous occasion. Ladies and gentlemen, let's put our hands together for the Honorable Vice President of India. Very good afternoon to all of you, and very special greetings to our foreign guests and delegates. My task has been made very easy. The Secretary of the Department has rendered a very comprehensive, exhaustive discourse, leaving nothing for me. And the Honorable Minister, with his passion, mission, and commitment and direction, filled up the gap. So bureaucratically and politically, there is no space left for me. Honorable Minister, Union Minister for Jal Shakti, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, आपका नाम ही सब कुछ बताता है। Gaj is one who optimally uses water, does not waste even a single drop. And Indra, Honorable Prime Minister, when he introduced me, and when I occupied the chair of Chairman Rajya Sabha, the upper house, by virtue of being the Vice President of the country, he introduced me as Krashak Putra. किसान को पता है इंद्र का क्या मतलब है। We have Honorable Chief Minister, Tripura. I have known him from before. A very nice man. Mr. Saha, our greetings to you in Rajasthan, my home state. Deputy Chief Minister Karnataka, Shri D.K. Shiv Kumar. There are very few state-level politicians with national recognition. He is one of the very few. He should be personally obligated to ISRO, because when Chandrayaan 3 landed on moon, they had DK in mind, and it was Shiv Shakti point. I am sure as an individual, he should have no issue with it, and persuade others also not to have an issue with it. When history is scripted by visionary leadership of the Prime Minister and commendable work of our scientists, exemplifying excellence all through, we must be only in one mode of salutation and mode of greeting them. Srimati Usha Sharma, Chief Secretary, Government of Rajasthan. Friends, when I addressed on Civil Services Day, I said India is lucky. It has bureaucracy that is spinally very strong. They get into bureaucracy by taking the toughest examination on the planet. All that they need is, let us not tie baggage around their back when they are swimming.
Now for last few years, they are having enough play in the joints, and the performance is for all to see. And the world is in absolute recognition of India's prowess. She represents the mighty Indian administrative service and bureaucracy. Honorable ministers from state, what I find in the audience, everyone is committed to the cause of the conference and is a critical, significant stakeholder in the assignment the conference has to address. I therefore, friends, take it as a great privilege to be in the esteemed gathering of experts, policymakers, stakeholders, academicians who have conversed to find a solution to enhance an issue which matters to humanity at large. The aspect which you will be deliberating has great contemporaneous relevance. Safe and secure dams ensure nation's prosperity. As a matter of fact, it is in the spirit of one earth, one family, one nation, one future. A nation has been conceived by us as a global entity. This, our civilizational essence, our age-old ethos, have now been conveyed to the world with greatest of acceptability in G20. International Conference on Dam Safety 2023, I can tell you, it has come not a day too soon. It's a turning around situation, a milestone achievement, breaking event for professionals across the nation and several countries joining hands. Friends, no one will disagree. Ad hoc solutions, individual-oriented solutions may be impactful, but the best solution is systemic. Systemic resolution, systemic conceptualization, systemic solutions are lasting. They are in public interest and they take us a long way. This conference will be addressing all these issues. The deliberations would certainly be productive and impactful. Exchange of ideas lead to innovation and out-of-box solutions. There is no substitute to a conference. Conference is a new method of learning. The best way to learn a subject is to teach. In the conference, you have people who will be teaching you, simultaneously being your students. So what you will take away from this conference will go a long way in furthering the cause you are addressing this day. Our capacity of Bharat to have big ticket accomplishments is now earning global kudos. Only last week, we had the World Bank president and his very significant observation. And what he said, India has achieved financial inclusion. And mind you, our diversity, our various regions, our population demographic component. And what does he say? India has achieved, I am quoting him, financial inclusion targets in just 6 years, which would otherwise have taken at least 47 long years. Can a country get such kind of a compliment and recognition from world's most significant expert body? This conference, therefore, is in a country and at a place where you can scale Himalayan heights. And I am sure it will happen.
G20 was an occasion that has proved to the world that India, Bharat, is in defining moment of its glory in the current century. We have to shape it, and when Bharat takes lead, it is for the entire world. I would not indicate what other leaders said. I have had the occasion to interact with many of them. They talked out of conviction. But facts are for all to notice. It was just a decade ago. This country was taken. This country, 1/6 of humanity, was taken to be one of fragile five. Brazil, Turkey, Indonesia, South Africa, and Bharat. The world at large was concerned. They were looking at these countries so that they could empower them. We have negotiated, friends, a decade with kind of success which was beyond our dreams and contemplation. In September 2022, Bharat became the 5th largest global economy. What a journey, traversing from fragile 5 to being world's 5th largest global economy. And in the process, we left behind whom? Those who ruled us for centuries. By turn of the decade, we'll be 3rd largest global economy. But what you are doing at the moment, and your efforts are bound to succeed, these efforts will culminate not only in global growth of the situation, but in attainment of Bharat at 2047, being a global leader in economy at the world firmament. And that for sure is bound to happen. It was very pleasing for me, soothing for me, because the Honorable Minister has a mission, passion, commitment, and is good at execution. I'm making reference to execution, Gajendra ji, in positive sense, because execution can have different variations. Just imagine vinyl wrapped pani ki rail. I had the occasion to flag it. And look at the names they have given. Kamakya is one. This speaks volumes. Thinking out of the box with innovation. And it is not flagging a conception. It is flagging execution. This novel and need of the times initiative, led by the National Water Mission and Ministry of Jal Shakti, in collaboration with Ministry of Railways, will showcase, motivate, inspire significant water conservation projects reflecting the vision of the Prime Minister regarding community-driven water conservation and management. Let me tell you, friends, something that I faced. I was in London to attend the coronation of Charles as representative of the government of India. Someone asked me, what were you talking with Charles when your wife was around and his spouse was also around? I said, while his consort was committed to certain public interest situation, my wife would force me. If I leave water on the dining table, she would force me to take water to my office, the same glass. Every drop matters. And therefore, what the Honorable Minister said, and not only said, he is in execution mode. Jal Sanrakshan has to be Jan Andolan. इसके अलावा कोई उपाय नहीं है. Dams, if we look at it from a different perspective, are concrete and steel structures, but they are much beyond. Dams are monuments to human ingenuity, perseverance, and the spirit of cooperation. Historical
aspect is that these have been central to economic, social, environmental development of nations across the globe. Dams act as guardians, and the Honorable Minister and the Secretary have indicated at length. I would not delve much into it, but they ensure water security to communities. They provide a steady supply for irrigation. And as I told you, Akrashak Putra will be extremely delighted because they take care of the sector to which I belong. My roots are there. And what is fundamental, more significant, important, by regulating the flow of water, dams stand as formidable barriers against the ravages of floods, safeguarding lives and property. We had the occasion at the beginning of this conference, a sad moment. We paid our tributes. We were in silence. And the recent flood ravages in Libya, created on account of certain situations, led to loss of lives of over 5,000 people. A grim reminder, a writing on the wall of urgent need to globally address the issue. This gathering, this enlightened group is fully equipped to find a solution. Friends, in a sense, dams are the silent sentinels that ensure our access to the lifeblood of our planet, securing our present and future prosperity. Our civilization of Bharat, is the oldest in the world. It has thrived over thousands of years on the banks of rivers, drawing life and sustenance from their waters. Our Bharat thus has a deep-rooted connection with water management and dam construction. A reference was made both by the Secretary and the Honorable Minister. Kallanai, the Grand Anicut, an ancient dam constructed by Chola dynasty, and that was thousands of years ago, 2,000 years, is still functional. It says two things. One, at that point of time in Bharat, we had the talent, expertise, mechanism to have a dam that could last for more than 2,000 years. And therefore, time for us to focus with respect to that background. Friends, go to any modern aspect of life. You will find a rich treasure in our ancient books. On every aspect. And ancient texts, including Vedas, Arthashastra, provide insights into this systemic and systematic management of water resources through the construction and maintenance of reservoirs and canals. Even look at Jaipur city, the Honorable Minister will tell you how things are done. He came to be applauded by when there was a Bawdi, and that Bawdi was of 400 years old. He brought it to life. It became a great attraction. We have a number of them. I had personally spoken to him that he has to focus on dams at fine, but he has to focus at micro level on all water bodies. They are present in every village. We have a Supreme Court directive that a water body, if it is there once, it shall always be taken as water body, irrespective of whether there is water or not. That dilution is taking place. I think the essence of Supreme Court mandate needs to be put into execution. Kautilya in Arthashastra emphasized on the necessity to build dams and reservoirs to store the rainwater for the use at the time of scarcity of rains. I come from Jhunjhunu, a part of Rajasthan. I represented that constituency in Lok Sabha in 1989.
we have some water. But the adjoining district, Churu, doesn't have that kind of water. I'll tell you an incident. A man from Churu came to the district to which I belong. He was surprised to see that water was going in narrow lanes जो बनाते हैं खेतों के लिए दोहरे. He thought, how can water be so aplenty? Because this is one natural resource where we have extremes, plenty and scarcity. So what he did was, he put his hands like this and picked up some water. In the process, he looked around whether someone is looking at him. And then there was a peacock on the tree. And the peacock said in his own voice, Pihu. That's how the peacock sounds. And the man from Churu said, Pihu nahi, dekhu hu, pani chhod diya. That is the power of water. Friends, we are 1/6 of humanity, 18% of global population, but with only 2% of land and 4% of water. Therefore, it is our obligation to optimally use water resources. I am pained sometimes and disturbed. कुछ लोग कहते हैं, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, चाहे जितना पानी काम मिल लूंगा, चाहे जितना पेट्रोल काम मिल लूंगा. They forget our civilizational essence, our constitutional prescriptions, our fundamental duties, our directive principles. All converge on one aspect. Natural resources आप मन मर्जी से खर्च नहीं कर सकते. आपकी आर्थिक ताकत उसके काम में नहीं जा सकती. You are obliged as a citizen, as a responsible citizen, to utilize natural resources only to the extent you need. You can't engage into wastefulness, and dam is one particular aspect of it. It's a classic reverberating instance of conservation of water and its most wholesome utilization. In years, particularly in Amrit Kal, there has been deserving focus on this sector. We had fewer than 300 dams in 1947, and in Amrit Kal we have surpassed it to 5,000. Honorable Minister says 6,000. Normally is not wrong, so I believe in that figure. This makes India the third largest country globally in terms of number of large dams. And look at our land percentage, 2. Our water resource percentage, 4. From every angle, it's a commendable performance. Guided by our civilizational mantra, जल ही जीवन है और जल नहीं तो कल नहीं. Honorable Minister said so. I'm borrowing it from him. This is just not a slogan, it's a hard reality. I have been as a professional involved, D.K. Shivakumarji, with the interstate water disputes. And the beauty of these water disputes is they are greatest heaven for lawyers. They never result in a conclusion. Am I right? My good friend D.K. Shivakumar is feeling the heat of it. Am I right? Our framers of our constitution were alive to this very serious problem. And they therefore provided a mechanism under Article 262. I would urge the Honorable Minister, he is on test.
he should bring an end to water disputes. He has the potential and capacity to do it. His own state, to which I belong, has water dispute with Haryana, water dispute with Punjab, and the disputes have lasted for decades and decades and decades. We have to find a way from that angle. A step in the right direction has been taken when there is a promise, Har Ghar Jal, but then you need water for it. The Honorable Chief Secretary knows Bisalpur is a lifeline. She must be under a lot of pressure from other areas. Give us Bisalpur water. But as a general preposition, they are asking for water from a dam. The more dams you have, more conservation of water you have. And there is a serious problem, like having a poor building, structurally poor, a poor dam. They become a liability in the long run. In a short run, they may turn out to be very attractive. And therefore, we must be alive to seismic aspect. And I'm not on the conventional scientific seismic impact. I am on a different level. Dam construction has to be extremely scientific. I need to congratulate the Honorable Minister, I know for a fact. A dam in one of our central states could have created havoc. No one had any idea what the designs are, how to tackle the problem. His intervention through good people in the ministry, he could find a way out. And lives were saved. A great contribution. This now he is formalizing. And it was a great moment when the government thought, very rightly, to have a separate ministry. The Honorable Minister got the honors to be the first minister. And then he has been armed by a statutory prescription of an enactment. And that enactment is an eye-opener. For the first time, the enactment focuses on safety. It also takes care of emergency situations, has some punitive measures, but more importantly, the Act has a lot of affirmative action-oriented mechanisms. And I'm sure all will be working in the right direction. I compliment all concerned and the Honorable Minister in particular for very successful completion of phase 1 of dam rehabilitation and improvement project. I am very optimistic. Phase 2 and 3 are also making good impact, and their success, given the past background, can be taken to be assured, and a great assurance to all of us that we are moving in the right direction. Friends, there was a time when in our country, if the meteorological department would say, today it will rain, the people were fully assured it will not rain today. They will not carry their umbrella. That was few decades ago. But what I've seen now, our meteorological department is so very accurate. Global leaders are taking their inputs as very valuable. I had the good fortune of being Governor State of West Bengal for 3 years, where we suffered several cyclones of huge intensity. वो बात अलग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ममता जी कहती थी कि वो मेरी वजह से आ रहे हैं,
but that is on the lighter side. But let me tell you, friends, there was not a single mortality on high seas because of very accurate prediction. And the government, our state governments are extremely alive to the human issue. They shifted human beings, the livestock also, and everything was minimized on account of scientific input being made available. I'm happy and delighted that the Honorable Minister has imparted a very significant spinal wing to this dam safety matter, scientific temper, scientific assessment. मुझे नहीं लगता, आपने तो कमाल किया गजेंद्र जी। जब वाइस प्रेसिडेंट बना तो कहा कि फुल मेडिकल चेकअप के लिए एम्स ले जाओ। मेरा पूरा मेडिकल चेकअप हुआ, कहा हर साल होगा। आई फेल्ट इलेटेड। मुझे पता लगा आप तो डैम का करा रहे हो और सक्सेसफुली करा रहे हो और ट्वाइस करा, यही कर रहा हूं। An imminent failure should not bring issue to attention. वरना क्या है, साइक्लोन आ गया, नुकसान हो गया, तूफान आ गया, नुकसान हो गया, फ्लड आ गया, नुकसान हो गया, और सब रास्ता निकालने निकले। That is timely assistance, but indicative and reflective of very poor strategy. We must anticipate. We must work in advance. We must not be faced with challenges that can be contained by far-sighted approach of governance. That I'm so glad is happening. Friends, I express my gratitude to all the experts, researchers, and practitioners who have dedicated their lives into advancing the science and practice of dam safety. I have believed all my life in one aspect. Execution is not difficult. Execution can be done. But all that goes before execution, that is important. That has to emanate from out-of-box thinking, from innovative approach, from research, and that you people are well equipped to handle. Your work is indispensable and extremely critical to safeguarding the well-being of communities, ecosystems, and economies around the world. I wish you all a successful and productive international conference on dam safety in 2023. And I can assure you, before concluding, out of personal experience, the Honorable Minister is a very good host. And credit goes not to him, but to his family. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your valuable insights. एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं for the Honorable Vice President of India. इस उद्घाटन सत्र का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय निकालने के लिए मैं भारत के माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय मंत्रीगण, गणमान्य अतिथियों और सम्मानित व्यक्तिगण से आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगी और आपकी उपस्थिति ने इस सम्मेलन का महत्व काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। हम आपके अटूट समर्थन के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आइए एक बार फिर से सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। With that, ladies and gentlemen, once again, let us unite in harmony and patriotism as we will be playing our national anthem. I'll request everyone to please rise. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे. Thank you. With that, we come to the end of the proceedings on this stage, but may I kindly request the Honorable Vice President and all our respected dignitaries on the dais to please join us for the launch of the exhibition being organized at the venue for the display or exposition of products, charts, banners, and photographs showcasing the latest developments, technologies, and solutions in various areas of dam safety. I will request everyone to kindly be seated for now.